Hi, my name is Hina Grover. My qualifications are MSc Physics B.Ed. Currently, I am teaching in an edtech company, and overall, I have 5 years of teaching experience, and I have also a startup on YouTube channel. अनअकैडमी एक बहुत अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स में भी क्यूरियोसिटी आती है पढ़ने की और एजुकेटर्स को भी क्यूरियोसिटी होती है पढ़ाने की because we all learn from the in an animated form, in the form of images, in the form of videos, in the form of Google forms, many things we also used to learn. Even educators also learn from this platform. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है और उनमें से जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फील करते हैं, उनको जल्दी आता नहीं है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प, लेकिन ओवरऑल माय एक्सपीरियंस इज गुड इन टीचिंग फिजिक्स। सो now regarding the content plan for NEET physics, I have divided the syllabus in these parts. So 20 hours for mechanics, 15 hours for thermodynamics and kinetic theory, for electrostatics and magnetism, 20 hours, optics for 15 hours, modern physics 15 hours, fluids, oscillations and waves for 15 hours. So one by one I will show their division ki for what topic कितना कितना टाइम लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट द काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें डेप्थ में नॉलेज चाहिए ताकि हम नेक्स्ट पोर्शन जो फिजिक्स का है वो अच्छे से समझ सके। लॉज ऑफ मोशन के लिए 4 घंटे दिए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज आती है इन नीट फिजिक्स, मतलब वेटेज अच्छी होती है। वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर 4 आवर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन फॉर 4 आवर्स, इसकी भी वेटेज अच्छी होती है नीट फिजिक्स में। And for gravitation 4 hours. Regarding the thermodynamics and kinetic theory, laws of thermodynamics, all the laws, zeroth law, first law of thermodynamics will be learned in 5 hours, and all the syllabus related to thermodynamics, heat transfer in 5 hours, kinetic theory of gases in 5 hours. Electrostatics and magnetism for 20 hours overall I have divided. So electrostatics can be learned in 3 hours, current electricity in 5 hours, magnetic effects of current and magnetism for 4 hours, इसमें से भी अच्छी स्ट्रॉन्ग वेटेज होती है नीट फिजिक्स के लिए। Electromagnetic induction and alternating current 5 hours, this also gives the good weightage in the NEET physics, and means it is an interesting topic also, इसको मैंने 5 hours में डिवाइड किया है। Magnetic waves, electromagnetic waves for 3 hours. Then regarding the top optics, I have given 15 hours, इसमें सारी लाइट रेज के बारे में, रिफ्लेक्शन, वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो इट रिक्वायर्स 7 to 7 hours for ray optics and optical instruments and 8 hours for wave optics. Then if I will come to the modern physics, ये 15 घंटे के लिए किया है। Dual nature of matter and radiation for 5 hours, atoms and nuclei for 5 hours, and electronic devices for 5 hours. It also give good weightage, high weightage in NEET physics. Fluids, oscillations, and waves. Overall, 15 hours is given. For fluid mechanics, 4 hours. For oscillations, 3 hours. And for waves and sound, इसका भी अच्छा वेटेज रहता है, स्ट्रॉन्ग वेटेज रहता है नीट फिजिक्स में, सो आई हैव गिवन 8 hours to it. Now let's come to the topic of work work done क्या होता है? वर्क डन इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं सो इट डिवाइड्स इनटू एफ कॉस ऑफ थीटा, मीन्स एफ डी कॉस ऑफ थीटा। हाउ इट इज, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, f sine theta. It is divided into the two components, f sine theta and f of cos of theta. So if we'll talk about the work done by the constant force, work done by the force is in a displacing body through a displacement axis given by. Work done तब होता है जब force और displacement, force लगाने पर कोई बॉडी मूव करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे।
इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, तब वर्क डन होता है। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो वी विल टेक दिस कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा। सो इसका डॉट प्रोडक्ट रहता है, व्हेन वी ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट वी गेट एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा, वेयर एफ इज अ फोर्स एंड एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, and cos of theta is a component, f cos theta is a component which we use in this, and theta is an angle made between the in the in between the displacement and the force. Now, if I talk about the units of the force, SI unit of the force is joule, and CGS unit is erg. And obviously, dimensions we everybody have learned, and we learn in physics that we calculate that ml2 t minus 2 is our dimensions for work. 1 joule is also 10 raised to power 7 erg. Now let's come to the positive work. पॉजिटिव वर्क में क्या होता है कि जो थीटा रहता है, द एंगल विच इज इन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, दैट इज बिटवीन 0 to 90 degree. And obviously, if it is 0 to 90 degree, the cos theta becomes positive over here. So overall work done will be, let us take some example. When the person lifts a body weight from the ground, the work done by the upward lifting force is positive. Whenever the lifter weights the lift, obviously the displacement is also upward and the force is also taken upward. So that is why the work done, overall work done, is positive here. And we also have seen the lone roller, which is pulling a force, and वो क्या करता है कि वो ग्राउंड को साफ करता है, ग्राउंड की ट्रिम, जो ग्रास होता है उसकी ट्रिमिंग करता है विद द हेल्प ऑफ द लॉन रोलर। सो वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उसी डायरेक्शन में रोलर चलता है। ऑब्वियसली हियर द वर्क डन विल आल्सो बी अबाउट नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे जो थीटा रहेगा इट विल बी बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, एंड एफ एक्स कॉस थीटा, जब यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है बिटवीन 90 to 180 डिग्री। जो कॉस थीटा की वैल्यू रहती है वो नेगेटिव रहती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क एंड इट्स एग्जांपल्स, नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली इट अपोजेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में रहता है और फोर्स एक डायरेक्शन में रहती है, इट इज अपोजिंग ईच अदर। तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी वेट from the ground, the work done by the force of the gravity is negative. Now it is lifting the body weight, और जो gravity होती है that also pulls it downside. So जो gravity वाली force हो गई और जो lifter की जो ऊपर वाली displacement होगी, they both are in opposite direction. So the here work done is negative. And if we talk about the frictional force, whenever we slide anything or whenever we walk, जो हमारा friction रहता है वो इस direction में आता है, when we are moving it goes in this direction, हमारी जो displacement रहती है वो इस direction में। Just come to the zero work. Zero work में क्या होता है कि यहाँ पे perpendicular रहता है force और displacement, तो cos theta 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। तो whenever cos 90 is what, cos 90 is 0, so overall जो work done रहता है वो 0 रहता है। So work done by the centripetal force is also 0. Centripetal force जो रहती है हमारे अराउंड, that is also 0. वहां पे थीटा कितना रहता है, 90 डिग्री। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं रिगार्डिंग दिस। नाउ इसमें क्या रहेगा कि जब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, सेकंड कंडीशन में क्या है जीरो वर्क की, कि व्हेन इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जब वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी, ऑब्वियसली एफ इज कॉस थीटा है, तो ऑब्वियसली अगर एस जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो ओवरऑल वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। लेट अस ट्राई विद एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक लड़का है, वो बहुत जोर से पत्थर को इज यूजिंग फोर्स ऑन इट। सो फोर्स तो लग रही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पत्थर है वो आगे डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ऑब्वियसली वो वहीं पे खड़ा है। इफ वी पुल द हैवी वॉल आल्सो, वहां पे क्या होता है कि वी आर अप्लाइंग फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय द वॉल। सो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। And the weightlifter does work in lifting the weight off the ground but doesn't work on it in holding it up. अगर वो खड़ा ही हुआ है वेट लिफ्टर, वेट को उठाकर, बट इज नॉट डिस्प्लेसिंग, तब वहां भी
जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, बिकॉज वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है बॉडी के ऊपर, देन ऑल्सो द वर्क डन इज जीरो। Motion of an isolated body in the free space